Welcome everybody. Welcome back on this beautiful journey. I hope our souls are ready to dive deep to the sweetest kind of life and the deepest kind of love. So happy to have all of you here on this new day, on our second week, and one more day to relook at the old power in a new way. We are starting with chapter 3 today and excited to be on this journey with all of you here, the new and the old members. Welcome, all of you. And let's start without wasting any time our new chapter and new way to looking at this power. Today, again, Drishti is going to read for all of us. And Drishti, I hope you can see the screen. Yeah, I can. Okay. So welcome. Today again we are going to look at feeling and frequencies. So we are going to look at feeling frequencies. So yes, So shall we start? yes. You Okay. have anything to say? You can. Otherwise, we can start. No, I think let's start and then if something comes up. Got it. Chola, are we audible now? Yes, there's something, Perfect. maybe Great. two things open. Yeah. Okay. Super. Okay. Let's start. If you can feel it, you can receive it. Everything in the universe is magnetic and everything has a magnetic frequency. Your feelings and thoughts have magnetic frequencies too. Good feelings means you are on a positive frequency of love. Bad feelings means you are on a negative frequency. Whatever you feel, whether good or bad, determines your frequency, and like a magnet, you attract the people, event, and circumstances that are on the same frequency. If you are feeling enthusiastic, your frequency of enthusiasm will attract enthusiastic people, situations, and events. If you are feeling fearful, your frequency of fear will attract fearful people, situations, and event to you. You are never left in any doubt about the frequency you are on because your frequency is always exactly whatever you are feeling. You can change your frequency at any time, but by changing how you feel, and everything around you will change because you are on a new frequency now. आई थिंक अभी ये थर्ड चैप्टर में आते आते हमें कोई शायद रात को उठा के भी पूछे तो ये तो हम बोल ही सकते हैं, राइट? कि शायद दिमाग में तो वो चल रहा है कि हाँ, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, हम मैग्नेट है, हम जो सोच रहे हैं वही हमारे साथ हो रहा है। शायद जहन में नहीं आया है, बट आई थिंक इट्स सेम थिंग रिपीटेड, ताकि इट्स लाइक पत्थर पे पानी गिरना, ताकि we just start seeing it, we just start being present to it कि हाँ, मैं ये सोच रही हूँ इसीलिए हो ये हो रहा है, मैं ये फ्रीक्वेंसी में हूँ इसीलिए सब मेरे साथ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, सो हर चीज, इट्स अ लॉ, हर चीज इस यूनिवर्स में मैग्नेटिक है, हर चीज एक यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसीज में है। और जब हम जो फ्रीक्वेंसी पे है वो फ्रीक्वेंसी पे ही हमें चीजें मिलेंगी। इफ आई एम इन लव फ्रीक्वेंसी, मेरे साथ सब लविंग होगा, आई विल एक्सपीरियंस इट एज लविंग, बिकॉज चीजें तो न्यूट्रल है। जब मैं गुस्से में हूँ वही चीज मेरे को गुस्सा और दिलाएगी और गुस्सा दिलाएगी। तो मैं जो फ्रीक्वेंसी में हूँ मेरे साथ वही वही होगा। So what, who is मैं? Okay, so if we have to here talk about who is मैं, our thoughts and feelings, you know, our thoughts and feelings are magnetic frequencies too. अगर हम पॉजिटिव फीलिंग्स में, अगर हम अच्छा फील कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लव के साथ है, जो द अल्टीमेट फ्रीक्वेंसीज ऑफ लव, उसके भी डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स हमने देखे। तो मोर वी स्टार्ट फीलिंग गुड, वी आर अलाइनिंग with that ultimate power, we are aligning with that ultimate frequency, and whatever we feel, whether good or bad, depending on हम जो फील करने का चूज कर रहे हैं, वैसी वैसी चीजें, वैसे वैसे सर्कमस्टेंसेस हम अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते जाएंगे, करते जाएंगे। तो वो इट्स लाइक अ हाईवे, लाइक अगर मैंने एंगर पकड़ा तो एंगर का हाईवे, अभी वहां पे सब एंगर 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 एंगर, सो आई एम एंगर वेटिंग टू हैपन। वहां पे जो मिलेगा मुझे एंगर ही दिलाएगा। इफ आई एम इन लव,
इट्स लाइक वहां पे जो मिलेगा मुझे लव ही दिलाएगा। सो अगर हम इंथुजियास्टिक है तो हम देखेंगे हमारे साथ जो लोग हैं वो भी इंथुजियास्टिक है, हमारे जो सिचुएशंस है वो भी हमें और इंथुजियास्टिक बना रहे हैं, हमें और इंथुजियाज्म ला रहे हैं। वर्सेस अगर हम डर में है तो हर चीज बस हमारे अंदर डर ही डर पैदा करेगी, हर चीज हमें डराएगी ही, अच्छा हो रहा है तो भी डराएगी, बुरा हो रहा है तो भी डराएगी। It's not in the situation, it's how we experience the situation that determine what we are getting out of it. So ये vagueness नहीं है, it works in clarity. There is never a doubt what we are experiencing. Simply जो हम फील कर रहे हैं वही हम दे रहे हैं और वही हमें वापस वापस मिलता जाएगा। बट द ब्यूटी ऑफ इट इज, नो मैटर आप ये चीज 10 साल से दे रहे हो या 50 साल से दे रहे हो, इस मोमेंट यू हैव द पावर टू चेंज इट। एंड जस्ट इन दिस मोमेंट इफ वी चूज नाउ फ्रॉम नेगेटिव आई शिफ्ट टू पॉजिटिव, तो लाइफ विल ओपन अप फॉर पॉजिटिव। और इफ वी चूज, अगर अभी हम सब चीज में क्या सही नहीं है वो देखना चाहे, then that will be our life experience. So yes, power is always there leading us to love and our free will wins. हम जो choose करेंगे वही वही हमारे experiences में आएगा। You Yes, can take any situation in your life, and every possible outcome of that situation can happen. Any outcome can happen because you can have any feeling about the situation. A relationship can be on a happy, joyful, exciting, satisfying, and every good feeling frequency. A relationship can also be on a boring, frustrating, worrisome, resentful, depressing, and every bad feeling frequency. Any outcome of that relationship can happen. And the way you feel determines exactly what will happen in that relationship. Whatever feeling you are giving about the relationship is exactly what you will receive back in the relationship. If you are feeling joyful about the relationship, most of the time you are giving love. And you must receive love and joy back through that relationship because that's the frequency you are on. A change of feeling is a change of destiny. perfect. Thank you. So exactly, life is mirroring us, our relationship is mirroring us, people around are mirroring us. And what we mean by mirroring, जो हमारे अंदर चल रहा है वही बाहर दिखेगा, वही बार मैनिफेस्ट होके आएगा और वही हमारा एक्सपीरियंस बनेगा। तो जैसे हमने देखा कि कोई भी सिचुएशन को अगर चार चांद लगाने हैं, अगर उसको फ्लरिश करना है, उसमें से दो अच्छी चीज पकड़ो और उसको गाते जाओ, that area will open up, it will like it will just beautify in all ways possible. एंड अगर वही एरिया में दो चीज पकड़ो जो सही नहीं चल रही है, एंड उसको गाते जाओ, उसको रिपीट करते जाओ सुबह शाम, एंड यू विल सी कितनी भी अच्छी सिचुएशन हो या पर्सन हो, देयर विल बी अ ब्रेक डाउन देयर। एंड लेट्स फर्स्ट ऑल्सो लुक एट दिस वर्ल्ड, लुक एट दिस लाइफ, हम कौन सी दुनिया में है। The kind of world we are living in is a dual world. There is yin and yang, there is good and bad. और ये हम नहीं, जब avatars came, when Ramji came, Krishna came, like that time also there was enough evil also. हमारा काम यहाँ पे, अरे ये बुरा है, ये बुरा है, इसको मुझे ठीक करना है, इसको मुझे ठीक करना है ही नहीं। हम बाहर, इतना वास्ट यूनिवर्स है एंड हर जन की फ्री विल इज वैलिड। तो हम बाहर की सिचुएशन में हमारे पास पावर ही नहीं है। आवर पावर इज इन व्हाट वी एक्सपीरियंस। अगर हम होटल में जा रहे हैं, देयर इज अ वास्ट मेन्यू कार्ड और आपको सिर्फ 3 आइटम चाहिए, आप फाइट नहीं करोगे कि दूसरी 300 आइटम वहां पे क्यों है। अरे किसी और को पसंद है वो, इट्स नॉट योर बिजनेस टू फाइट दैट। यू जस्ट पिक, तुम्हें क्या चाहिए तुम वो ऑर्डर करो, वो मिलेगा। अगर वेटर में वो पेशेंस नहीं है और तुम वहां पे बोल रहे हो अरे ये क्यों है, ये नॉनवेज क्यों है, ये ठीक नहीं है, तो उसको लगेगा ये चाहिए, वो लेके आएगा। तुम्हारा बिजनेस है, हर चीज रहेगी बिकॉज हर जन की फ्री विल है। तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें क्या चाहिए वो लो। एंड दैट द ब्यूटी इज योर फ्री विल विंस। तुम जो चूज करोगे वो तुम्हारा एक्सपीरियंस बनेगा।
So no matter what the world is, you will experience what you are. And what bigger power than that? इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है? So yes, let's just use our free will instead of focusing on क्या सही नहीं है. Because हर एरिया में ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी रिश्ता या खुश होगा या अच्छा नहीं होगा, या एक्साइटिंग होगा या वरीसम होगा. एक्चुअली अगर हम देखें इन एनी एरिया, बी इट हेल्थ, बी इट बिजनेस, बी इट रिश्ता, be it with our partners, with our kids, there is a spectrum. There are spectrum of the non-working areas and spectrum of working areas. It's just तुम कहाँ अटक जाते हो. अगर हम वापस, we are again coming back to a feeling chart. Like with a child also, definitely there will be once in a while all these emotions, below the line emotions also. पर अगर मैं एंगर को पकड़ के अटक गई, I will not experience other things. These are very sticky emotions, you know. So सब है, या तुम कुछ एरियाज में जस्ट ग्लाइड करके निकल जाओ and you reach to where you need to, और तुम एक जगह, अगर तुम मुंबई से गोवा जा रहे हो रोड ट्रिप पे, और तुम बीच में 2 घंटे के बाद बस अटक गए कहीं, और वहां से जा ही नहीं रहे हो, वहां से हिल ही नहीं रहे हो, और तुम बोल रहे हो अरे 6 घंटे में बोला आ जाएगा, 8 घंटे में बोला आ जाएगा, मेरे को तो 10 घंटे हो गए. अरे बिकॉज यू चोज टू जस्ट sit on a destination and not move, sit on a stopover and not move. You know, these envy, guilt, fear are some stopovers which will come. If you let it slide, if you just witness it and let it pass, like they won't consume your life. But तुम अगर उधर पकड़ के बैठ गए उसको, these are sticky दलदली इमोशंस, तो फिर वही 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 मल्टीप्लाई होगा. सो हर एरिया में सब है, बट इसमें से तुम किस पे फोकस डालोगे, दैट विल मैग्निफाई. तुम जिस पे फोकस डालोगे वो बड़ा 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 होता जाएगा. द सेम विद ग्रैटिट्यूड एंड सेम विद इरिटेशन, सेम विथ लव, सेम विथ फियर. तो हर रिश्ता, हर सिचुएशन या अबव द लाइन हो सकता है, हैप्पी, जॉयफुल, एक्साइटिंग हो सकता है, या फिर बोरिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, रिजेंटफुल, डिप्रेसिंग हो सकता है. हर चीज उस चीज में पॉसिबल है. डिपेंडिंग ऑन मैं वहां पे क्या इमोशंस दे रही हूँ, वैसे वो मेरे साथ काम करेगा. तो और वो एक एग्जैक्ट साइंस है, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन है. यहाँ पे कोई विक्टिमहुड नहीं है, मैंने सब किया और मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ. अगर तुम्हें लग रहा है अच्छा नहीं हो रहा है, तुम सिर्फ डिस्कनेक्टेड हो, तुम क्या दे रहे हो उससे. द मोमेंट यू कैच योर सेल्फ रियली बींग प्रेजेंट टू, कि एक फैंसी पैकिंग के नीचे डीप डाउन क्या इमोशंस दे रहे हो, अनफेलिंगली तुम्हें वही मिल रहा है. बिकॉज द लॉ डजंट डिस्क्रिमिनेट. So, if you're giving love, you must receive love and joy back in the relationship, because वही frequency पे हो, वही frequency पे, और कुछ एक रेडियो है उसमें 15 टाइप के सॉन्ग्स एक साथ चल रहे हैं. बट अगर एक सॉन्ग एक तुम्हारे एफएम पे है और तुम बोल रहे हो मुझे ये नहीं कोई और चाहिए, नहीं अब भी ही कोई और चाहिए, नहीं होगा. बट इफ यू जस्ट चेंज द फ्रीक्वेंसी, इट विल कम, इट मे कम, यू नो. So a change of feeling is a change of destiny. This is true on so many levels. If we see, like, in this group only we discussed that at some point or the other there was a time in life where we chose कि नहीं बस हो गया spiraling. Now we choose to feel differently. Or probably what this book brought in my life, I'm in the same house, I'm with same people, I'm in same relationship. Simply, I started being more present to the good parts, and everything same, just मेरा नजरिया बदला. I mean, this became the most fulfilling, most nourishing part of my life. जिसको एक टाइम पे probably I was thinking अरे फंस गई or this or that, suddenly opened up to what a beautiful, what a nourishing, what a life defining journey. What changed? Feeling changed. Same versus अगर एक जन, what is murder, what is this thing? It's just anger taking a form in a different way. एक जन का probably कुछ साल of life has been bad bad bad, and suddenly एक दिन वो गुस्सा आया, things happened, and somebody just probably went out, channeled out that anger in a certain way, and there are so many people's destiny changed. So her emotion, with that intensity will change our destiny.
बट द ब्यूटी इज वी आर द डायरेक्टर्स. कौन से वे में डेस्टिनी चेंज करनी है वो हमारे हाथ में है, हर हर पल में हमारे हाथ में है. लाइक इफ वी इवन हियर द वाल्मीकि स्टोरी, like he was the Valio Lutaro, like he was the Angulimar, like he was roaming around in jungles and cutting people's fingers and wearing it on his this thing. So of course he had a past that we cannot even imagine or accept fully. But again, something happened with him that made him from that to probably the author of the biggest epics of our life and our times. And that has changed so many people and generations, this thing. So no matter तुम क्या हो, no matter हमारा past क्या है, any change of feeling is enough to change our destiny. Yes. Look at the list of feeling frequencies, and you will see that no matter what the subject in your life, there are many different feeling frequencies. And you determine the outcome of each subject through how you feel about it. You can feel excited, happy, joyful, hopeful, worried, fearful, or depressed about money. You can feel ecstatic, passionate, blissful, discouraged, or anxious about your health. These are all different feeling frequencies, and whatever feeling frequency you are on is what you will receive. You may want to travel, but if you feel disappointment that you don't have the money to travel, then on the subject of travel, you are feeling disappointment. Feeling disappointment means means you are on the disappointment frequency, and you will continue to receive disappointing circumstances in which you cannot travel until you change the way you feel. The force of love will move every circumstance for you to travel, but you have to be on one of the good feeling frequencies to receive it. You can read till the quote. When you change the way you feel about a situation, you are giving a different feeling. You are on a different feeling frequency, and the situation must change to mirror your new frequency. If something negative has happened in your life, you can change it. It is never too late because you can always change the way you feel. To receive what you would love, to change anything into what you would love, no matter what the subject, all it takes is changing the way you feel. If you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Nikola Tesla. Perfect. Thank you. Okay. So again they are saying कि ये frequency chart पे देखो और देखो कि कोई भी एरिया है उसमें हर एरिया में ये different feeling frequencies है. And depending on तुम जो frequency पे हो वही तुम्हारा वो एरिया में तुम्हारा एक्सपीरियंस रहेगा. सो अगर तुम कोई एरिया में एक्साइटेड हो तो वहां पे अच्छी चीजें होंगी, और कोई एरिया में एक्साइटेड नहीं हो, डिप्रेस्ड हो, वरीसम हो, तो तुम्हें और कारण मिलेंगे. बिकॉज यूनिवर्स इज लाइक अच्छा इसको डिप्रेशन और वरी चाहिए, तो इट विल बम्बार्ड यू विथ थिंग्स एंड सिचुएशंस वेयर यू कैन फील मोर डिप्रेस्ड एंड वरीड. नो. सो हर ये सब फीलिंग फ्रीक्वेंसीज है, और तुम जिस पे हो तुम्हें वो मिलेगा. अगर तुम लव पे हो तो तुम्हें ज्यादा लविंग चीजें मिलेंगी, तुम अगर हेट पे हो तो ज्यादा हेटफुल चीजें मिलेंगी. सेम है, एक जन अगर ट्रैवल का सोचता है देन दैट पर्सन थिंक्स वाओ क्या मजा आएगा, क्या मेमोरीज बनाएंगे, क्या दिस विल बी द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ. नया स्पेस एक्सप्लोर करेंगे, नया खाना एक्सप्लोर करेंगे, रिलैक्स करेंगे. And the travel works like that for them. Versus somebody else thinks of travel. It's like यार कितना खर्चा होगा, यार कितनी प्लानिंग होगी, अरे कितने लोग होंगे, अरे लाइक यार पर कैसे करेंगे, अरे शॉपिंग भी बाकी है. अगर हम उसमें नेगेटिव चीजें डालें तो सेम थिंग विल बिकम हैवी, विल बिकम ड्रेनिंग, विल बिकम. ये सेम ट्रैवल है पर उसमें हम जो इमोशंस डालते हैं वैसे वो हमारे साथ काम करेगा. Mostly travel is also neutral.
बट हमने खुद को कंडीशन किया है कि अच्छा वेकेशंस के लिए एक्साइट होने को, दैट्स व्हाई दे वर्क एक्साइटिंगली विथ अस। बट द ब्यूटी इज इन एक एरिया में जैसे हम खुद को ट्रेन कर सकते हैं, ऐसे वो हर एरिया में ट्रेन कर सकते हैं। इफ वी स्टार्ट ट्रेनिंग आवरसेल्व्स टू फील द सेम एक्साइटमेंट फॉर वर्क, फॉर relationships, we will see that area will open up also, because it is only एक जगह पे वो चीज काम कर रही है, we can replicate it in all areas. So travel is neutral. We have seen enough people. I have been in my phase of life also where I'm like, बस और travel नहीं होगा, you know. So simply तुम वो एरिया में जो इमोशंस डालो वैसे वो एरिया तुम्हारे साथ काम करेगा. सो अगर हम डिसअपॉइंटमेंट फ्रीक्वेंसी में है तो वी विल सी यहाँ पे टिकट्स महंगी हो गई, यहाँ पे कुछ और हो गया, यहाँ पे कोई फ्रॉड हो गया, यहाँ पे ग्रुप के साथ गए मजा नहीं आया, इरिटेशन हुआ, सो दिस इज ऑल. अगर हम डिसअपॉइंटिंग फ्रीक्वेंसी में तो वहां पे जो होगा वो यही फ्रीक्वेंसी की चीजें होंगी. सो अगर हमारे साथ चीजें ठीक नहीं चल रही है इन एनी एरिया, अगर आपने किसी और को बोला कि तेरी वजह से ठीक नहीं चल रही है, यू आर जस्ट ओपन योर सेल्फ फॉर डिजास्टर, यू नो. क्योंकि तुम एक प्रतिबिंब से बात कर रहे हो, तुम एक रिफ्लेक्शन से बात कर रहे हो, वर्सेस लाइक अच्छा ये सब मेरे साथ हो रहा है, मे बी आई एम गिविंग आउट समथिंग दैट इज बिलो द लाइन, लेट मी चेक व्हाट फ्रीक्वेंसी आई एम ऑन. टेक अ मोमेंट, टेक अ ब्रेथ, चेक विथ योर सेल्फ रियली डीप डाउन. तो हम क्या दे रहे हैं इन दिस मोमेंट, वी हैव द पावर टू चेंज दैट. एंड द मोमेंट वी डू, धीरे धीरे वी विल सी थिंग्स विल फॉल इन प्लेस. बिकॉज सब इधर ही है. हमारा जहाँ पे नजरिया जाता है, हमारा जहाँ पे ध्यान जाता है, वो हमारे एक्सपीरियंस में आता है. लाइक दिस इज अ वेरी नोन एनालॉजी दे यूज कि तुम रोज यहाँ से वर्क के लिए एक रोड पे ट्रैवल कर रहे हो, यू नो एंड इफ आई आस्क यू कि वहां पे तुमने कितने येलो बोर्ड्स देखे, probably you're traveling to that road 10 साल से, बट शायद तुम एक दो से ज्यादा येलो बोर्ड तुम्हें ध्यान भी नहीं आएंगे. बट टुडे व्हेन यू गो यू मे फाइंड लाइक 100 येलो बोर्ड्स. डजंट मीन अभी तुम देख रहे हो और उन्होंने बोर्ड लगा दिए कि आज ये देखने वाले हैं. नहीं, वो बोर्ड्स तो हमेशा से थे, पर फाइनली तुमने वहां देखना शुरू किया तो वो तुम्हारे एक्सपीरियंस में आया. हर एरिया में खुशी, जॉय, एक्साइटमेंट तो हमेशा से है. हम उधर देख नहीं रहे तो वो बेचारे वेट कर रहे हैं कि बॉस जब देखेंगे तब हम उनके लाइफ में आएंगे. तुम कहीं और भटके हुए हो, सो अगर हम वो एरिया में खुशी, जॉय ढूंढेंगे तो वो हमारे साथ आएगा. सो द ब्यूटी इज हर मोमेंट में वी कैन चेंज what we are giving out, and that area will mirror back what we are giving out. If something negative has happened in your life, also you can change it because it's never too late. And it's only in the contrast, there is a wisdom. अगर अगर इतना बड़ा मेन्यू नहीं होता तो मेरे पास चॉइस ही नहीं होती. मुझे अगर पता नहीं होता मुझे क्या नहीं चाहिए, जो नेगेटिव चीजें हैं दैट आर ऑल्सो सर्विंग अ पर्पस, दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस. ओनली विथ दैट कॉन्ट्रास्ट we come to know what we want in life. Like I'm from a joint family, and I had a fill of like a lot of great experiences, and usi की वजह से I could be on a journey where I wanted to choose more alone time, more alone time. अगर शायद मेरे को वो environment नहीं मिलता तो आज मैं वही सब चीज जो वहां पे मैंने की, मेरी पूरी 4 लाइफ टाइम लग जाती वो चीज करने को. versus life gave me a platform where just what I needed to be on my swadharma, on my like own journey, like I had to go through that experience. तो जब हम अपने चाइल्डहुड से फाइट करते हैं, जब हम अपने पेरेंट्स से फाइट करते हैं, वहां पे जो एक कॉन्ट्रास्ट है, वहां पे जो एक विजडम है, वहां पे जो हमारे ओन जर्नी का एक रास्ता है, हम वो मिस कर देते हैं. एक बहुत ही जोक है खराब, जो मुझे सुबह से याद आ रहा था. सो दीज पीजेज, तो इसे एक सुई में से हाथी ऑलमोस्ट निकल गया बट बस लास्ट में अटक गया. तो क्या हुआ? तो द आंसर इज किसी ने उसकी पूंछ बांध दी. सो ऑफकोर्स अ वेरी स्टूपिड जोक, बट दिस इज विथ मेनी सिचुएशंस इन आवर लाइफ कि वो सिचुएशन में हर चीज अच्छी होती है, बस वो दो छोटी चीज अच्छी नहीं हुई जिसको हम पकड़ के बांध के बैठे हैं, वो हमें उस चीज से मूव ऑन ही नहीं करने देता. वो
हाथी वो सुई में अटका ही रहेगा, एक छोटी चीज की वजह से. So, but the moment we integrate that in our life, that wound will become the biggest wisdom of our life. One of the reason हमने वो wisdom को accept नहीं किया है, because हम जिंदगी से लड़ रहे हैं. हमें लग रहा है जिंदगी हमारे अगेंस्ट है, उसको नहीं पता है हमारे लिए क्या सही है. you know no, जिंदगी knows the best. It is doing everything to lead us to love. And हमें ये सारे ingredients लगेंगे, to create our own unique recipe. But अगर तुम ingredients से fight करोगे, you will not be able to create the recipe. So ये universe को again हम ये ऐसा है वैसा है, ये अमीर है गरीब है नहीं सोचे. We just see it as, अगर हमें ये universe के secret जानने हैं, we have to start thinking in terms of energy, frequency and vibration. हर चीज एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन है. हम जो फ्रीक्वेंसी में है हमें वो मिलेगा, हम जो चीज रेवोब्रेट कर रहे हैं हमें वो मिलेगा, और उसमें जितना इंटेंसिटी डाल रहे हैं वो इंटेंसिटी से हमें मिलेगा. किसी को कुछ सवाल, एनी क्वेश्चन? So again, we can't miss looking at this feeling chart. So we will take a small check-in again for this feeling chart and ask के ऐसा क्या हो सकता है शायद, जहाँ पे नेचुरली हम above the line रहे, या ऐसा क्या हो सकता है जहाँ हम नेचुरली बिलो द लाइन आ जाते हैं, या क्या और ओपन अप हो रहा है ये फीलिंग चार्ट से, कि क्या एक अंडरलाइन इमोशन अगेन हम कल्टिवेट कर सकते हैं दैट पुट्स अस इन अबव द लाइन, or whatever is present for you. We'd love to hear. Can I share? Yes, Shola. Welcome, by the way. Good to have you here. Sure. मुझे नहीं पता था, बट मेरा मनी में सबसे डाउन है फियर. Hmm. कैसे Got होगा, कैसे होगा. I hear you. And life will give you more reasons to be in fear, right? It's nice to see this picture, and I'm just getting present to it. Yes. And the beauty is you are the creator. So maybe 10 साल भी fear दिया, but आज अगर आप love दोगे, तो that area will change. And we start small. We come to a criticism first, we come to boredom first, we come to enthusiasm first. धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे. But I think as we were discussing, to catch के अच्छा हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है, उससे बड़ी नियामत नहीं है, उससे बड़ा एक डिस्कवरी नहीं है. So I'm so happy in your very first session you got present to that. And thank you for sharing that. Thank you. Thank you. Welcome. Super. Can Yes. we take one example on, for example, this whole fear of money, right? Like, or whatever is fear or guilt or in whatever areas. Now, when you say love, what do you do actually? Like, right? Like, how do you go above the line? Because maybe suddenly it's hard to change those things, right? So what are the small steps you start taking? If, I mean, either Bhumi or anyone has any ideas. Anybody would like to? Maybe we can. Yeah, please. Please speak. I'll share later. So I think so we can start doing Just um, yeah, I think so we can start doing things what we love or what we are excited about. We don't know that those things sometimes are our prime choices. Uh, this was just giving me a recollection of a time when I was feeling a little bit low on life. Might be around 2021, 2022, and the life was pretty slow. So I just started doing small things, which really changed my day.
like taking a walk. Maybe going after a walk, I started running. And after running, then I realized, ki, okay, I have more time, more exploration to do. So I started go-karting. And फिर go-karting भी अच्छा लगा, तो I started doing something. I joined aviation class. I didn't complete it, but still, this just paved a path of exploration, for at least for me. So I realized that small changes, what we act on, that one thing in that day that you are really excited about. Maybe it might just be nothing, just watch a movie as well. Just change the mood, just change the vibe. I have been the best time I have enjoyed in theaters is by myself. COVID time में IMAX में 99% theater used to be empty. I used to go at the last show and sit by myself and have a theater to myself. So it can be anything. You can enjoy a meal, you can enjoy something, but anything which is really involving you, which is really exciting you, which just changes your vibe, and that vibe may just be a Kickstarter to something of a big change, which I feel which worked for me. I don't know which represents here completely, but this is something which worked for me. That small change, that small step, that small excitement was a गाड़ी में चाबी घुमाने जैसे है जिस गाड़ी स्टार्ट करने के लिए then the throttle is completely onto you wherever you take it. And then we got married. Thank you for sharing, Kunal. Yes, Chola. Um, yeah, I was thinking I'll start writing gratitude for what aspect of money I'm right now, I'm having and I'm generating everything. And what, like gratitude and money, I'll connect is what I got present. And I like what Kunal shared, like small changes, even that mood shift when I have that worry and fear. And see what Bhumi, you're happened. on Like, mute. uh, Okay. Yes, thank you. Thank you, Chola, for sharing and being present to it so fast. I think हमने ये feeling chart पे 50 बार वही बोला है. Above the line में जाओ तो जो चाहिए मिलेगा and you are catching it already. So thank you, thank you. And एक श्योर चीज बोलूं, पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए, a lot of gratitude will open the money areas. That is one. Another is you just start catching every time we are paying also. Like, there's certain pain. यार जा रहा है, यार बहुत महंगा हो गया, बहुत खर्चा हो गया, सो दैट इज आवर बिगेस्ट गिविंग एनर्जी. हम वहां पे कैसे ब्लेसिंग्स में डालें कि सी इट एज अच्छा मैं चैरिटी कर रही हूँ, सी इट एज अच्छा मैं किसी के लाइफ में इट विल मेक अ डिफरेंस, सी इट एज अरे मेरे पास इतना है, ये इतना तो मैं दे ही सकती हूँ. सो दैट इज आवर बिगेस्ट गिविंग एनर्जी. एंड अननोइंगली अनकॉन्शियसली हम तभी बहुत ही बड़े हेवी हार्ट से देते हैं. सो व्हाट वी गेट बैक इज मोर लोअर फ्रीक्वेंसी. And this is probably one experience in childhood. Maybe this lack of money is not restricted to people who didn't have money. It's a very personal frequency. शायद एक बार बचपन में हमने ऐसे कैच कर लिया कि अच्छा यहाँ पे पैसे बचाए जा रहे हैं. उसके बाद वी प्रोबेबली स्टॉप लुकिंग एट एवरी एरिया जहाँ पे खुल के दिए भी जा रहे हैं. बट हमने लास्ट 20 साल में 30 साल में वही एरियाज कैच किए. देखा बोला पैसे इनफ नहीं है, देखो बचा रहे हैं. देखा बोला पैसे इनफ नहीं है, देखो बचा रहे हैं. तो पैसे इनफ नहीं है इज नॉट द रियलिटी. हमने 30 साल में खुद को ट्रेन किया है टू लुक इन ऑल एरियाज जहां पे हमने इतना ओपनली नहीं दिया है, एंड दैट इज हाउ दैट एरिया इज वर्किंग फॉर अस. So everything is coming from one childhood experience repeated billions of times that had made it's such a snowball. तो एक नया सीड डालेंगे to start feeling love for money. एक नया सीड डालेंगे to start feeling grateful for all the areas where money was provided for. आज हम 30, 40, 50 years के हैं.
Like, there's not a single day that has gone without food, without shelter, without education, without, technology. इतना है ना, वो सिंपली बोल रहा है यार तुमने मुझे तो देखा ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं आता हूं तो भी मेरी तो वैल्यू ही नहीं है। तो उसको ग्रेटिट्यूड देना, स्टार्ट राइटिंग ऑल्सो फॉर ऑल द मनी वी बिन गिवन थ्रू आउट आवर लाइफ। बस उसको ध्यान नहीं दिया गया है, इसीलिए वो मैग्नीफाई नहीं हुआ है। इट्स सिंपल एज दैट। एंड I think I'm just so same. Like I remember my uncle. Bachpan se I have experienced, I have attended like hundreds of functions, and so many times I would worry कि यार my uncle loves hosting events and functions. And कोई event आता था, function होता था, I actually have felt worried यार कितना खर्चा हो जाएगा, कितना खर्चा हो जाएगा, versus मेरे तो जेब से जा भी नहीं रहा है, you know versus he is just so excited कि वाह फंक्शन करेंगे, वाह सबको बुलाएंगे, वाह बेस्ट खाना रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हाउ ही इज रिलेटिंग टू मनी इज विथ एक्साइटमेंट, विथ जॉय। वो फंक्शन कर करके नहीं थकते, वो बड़ी से बड़ी पार्टीज दे दे के नहीं थकते। एंड वर्सेस पीपल हु हैव बिलो द लाइन फ्रीक्वेंसी, जिसको सिर्फ वो फंक्शन में 2 घंटे के लिए आना है, वो उस छोटी चीज में अटक जाते हैं। अरे एक और फंक्शन, अरे एक और कपड़े लेने पड़ेंगे, अरे एक और, मतलब उनकी शायद 3 प्लेट का खर्चे में हमारे कपड़े आ जाएंगे। बट इट्स जस्ट प्रॉबेबली द माइंडसेट, द सेम हाउस, द सेम फैमिली, द सेम एवरीथिंग। It's just how one person is looking at something with excitement and they are getting maybe crore times more to spend simply because उन्होंने वो energy को tap किया है। Versus somebody else is anytime they think अरे function, अरे कपड़े, अरे खर्चे, so what we are experiencing is lack in even the smallest of things. So it's in the mindset, you know and whatever, जो मतलब literally when I'm paying 100 rupees then I'm feeling pain, what really money is receiving, अरे इसको तो मुझे देने को मजा ही नहीं आता है, तो इसको मेरी जरूरत ही नहीं है, I don't want to cause her more pain, you know so let's leave it be, like मैं इसको ज्यादा, I can't come more to her because she doesn't like spending on me. So this is where probably the things start shifting. Let's get present to कहाँ हमने enough gratitudes नहीं दिए हैं. Let's take time to give love to all the things we have received, because there is immense, 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 immense things that we have. And parents को gratitude is answer to all areas, you know. And parents को forgiveness, ho'oponopono. हमें पता भी नहीं होता है, बट थिंग्स आर देयर इन अस, हमें पता भी नहीं होता है। So yes, thank you, Drishti. Probably some other time we can look at it more. But thank you for bringing that up. And that is not just true for money, but all areas. Thank you. Yes, Parati. So you somebody was asking what is love. So because I'm also associated with Isha, so what I have realized that whenever I do inclusion of somebody, I become more compassionate, and then I'm able to give more love to them. So suppose I see the person in front of me who's fighting with me as against me. But if I start thinking that, okay, that's like my daughter or my son or somebody, and I include them, then automatically the love, compassion comes about. क्या बात है. Thanks for sharing that, Parati. Yes. So हर चीज, simply what we are, again, if we think about what she's saying in terms of frequencies, यहाँ पे एक frequency है, पर अगर उसको हमने love दिया तो वो पूरी चीज की frequency बदल जाएगी. And these are just simpler ways to do that. Like if I see probably God in them or see my mother or daughter in them, simply how we react to it, how we treat it changes. And that's how that situation starts changing for us. So just yesterday I was sitting with this chart, and what was present for me was कि शायद शायद above the line emotions naturally तब आते हैं जब हमने लाइफ को in its wholeness accept किया है.
जब हमने लाइफ के हर पार्ट को एक्सेप्ट किया है। अगर हम बोलेंगे कि ये नहीं, ये ठीक नहीं है, बाकी सब चलेगा, तो तुम गुड थिंग्स भी वहां पे एंजॉय नहीं कर पाओगे। जब दो अच्छी चीज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, बिकॉज एक्सेप्शन इज इन होलनेस, इट्स इन एब्सोल्यूट इंक्लूजन। इंक्लूजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दैट यू बॉट, दैट हर चीज को इंक्लूड करेंगे तो ही होल आएगा। हाथी के सिर को, पूंछ को, हर चीज को करेंगे तो ही पूरा हाथी आएगा। अपने बचपन के हर पार्ट को फुल्ली ऑनर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो ही वो हाथी सुई से निकल जाएगा। नहीं तो वो गार्ड बंदी रहेगी और वही एरिया, बस हर अलग अलग सिचुएशन में वही चीज दिखेगी। सो एब्सोल्यूट इंक्लूजन। एंड वो इंक्लूजन कब आएगा? टिल द टाइम हम हमें लग रहा है हमारे साथ गलत हुआ, टिल द टाइम हमें लग रहा है कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, आई डिजर्व बेटर, आई डिजर्व डिफरेंट, आई डिजर्व दिस, आई, तब तक तुम जिंदगी से लड़ते रहोगे। बट द मोमेंट यू रियलाइज, ओ माई गॉड, दिस पावर इज जस्ट वर्किंग फॉर मी, हर मोमेंट, हर घड़ी, हर सिचुएशन में ये पावर मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है। इट इज ऑल फॉर मी एंड इट इज डूइंग एवरीथिंग इन इट्स कैपेसिटी to give me the best, and whatever is happening to me was the best that happened to me, you know। अगर हम वो चीज से करें, and what really deep down we are saying, power I trust you, life I trust you, I know you have my back, you know। So the moment we are in acceptance of life, the moment we are in trust of life, the moment we know this power is working for us, we will naturally see, you know, there will be a sort of shanti, there will be a sort of excitement, there will be a sort of joy and gratitude. It's like a bacha, a 5 year old bacha is going to a mela, you know। अगर वो बच्चा पेरेंट्स के साथ जा रहा है, बच्चा कैन जस्ट गो, ओके ये राइड, ये राइड, ये खाना, यहाँ जाना है, ये चाहिए। वर्सेस इफ द बच्चा डजंट हैव हिज पेरेंट्स देयर, ऑल he'd be is just worried, शिट मैं क्या करूं, मैं घूम गया, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास ये राइड का कुछ पैसा नहीं है, मेरे पास खाने की कुछ वो नहीं है, लाइक यू नो मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं। वर्सेस दैट बच्चा, वो घूम भी जाएगा, उसको पता है पेरेंट्स मुझे ढूंढ लेंगे। So what is the difference there? You know, one child had that trust, one child had that feeling of safety that I know I am taken care of. I know मैं जो चाहूँ वो यहाँ पे कर सकता हूँ। Versus दूसरा doesn't have that safety, is feeling threatened, is not feeling safe, and उसका वही same मेले का experience will be a very threatening, a very unnerving experience. सेम विथ आवर लाइफ, यू नो। क्या हम लाइफ से कॉन्स्टेंटली लड़ रहे हैं, ये क्यों दिया, ये क्यों मिला, ये सही नहीं हुआ, ये ऐसा है, वो वैसा है, तुम्हें नहीं पता है मुझे क्या चाहिए? कि नो यार, आई एम इन सच ट्रस्ट ऑफ दिस लाइफ, ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी, कि उसने मुझे जो दिया वो मेरे लिए बिल्कुल सही है, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, यू नो। आई लव एंड एक्सेप्टेड ग्रेसफुली, एंड वो मेरे लिए सही ही होगा। मे बी शायद मुझे आज नहीं समझ रहा है, मे बी मुझे 5 साल बाद समझेगा। So the moment we stop fighting with life, moment we start seeing life is in our favor, everything life जो कर रही है वो हमारे लिए कर रही है, it is in our service, you know। Probably naturally our तो childhood में भी जो हुआ, अभी भी जो हो रहा है, is all happening in my favor. So naturally we might be more towards above the line. Naturally we will feel safe enough to trust life, to flow with life, to tap into, to let go of the darkness, to naturally flow towards the light. वर्सेस अगर हम हर स्टेप पे, हर उस पे लाइफ को क्वेश्चन कर रहे हैं, तू सही नहीं, तूने ठीक नहीं किया, तुझे नहीं पता है, अगर हम फाइट कर रहे हैं रियलिटी को, वी कैन नॉट विन। एंड यू नो व्हाट इट विल कीप अस इज इन बिलो द लाइन। दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट अ पर्सपेक्टिव, ये कुछ भी ट्रूथ नहीं है, हम यहाँ पे पर्सपेक्टिव शेयर्स कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर मेकिंग मिस्टेक्स, एंड ऑफ कोर्स, बट यस, इट्स इन पर्सपेक्टिव्स, इट्स एन ऑफरिंग। एक्सेप्ट कर, मतलब इट, इफ इट इज रिलेटेबल एक्सेप्ट, इफ नॉट लेट गो, but it's just a perspective share. Yes. Take your feelings off automatic pilot. Many people don't know about the power of good feelings, and so their feelings are reactions or responses
to what happens to them. They have put their feelings on automatic pilot instead of deliberately taking charge of them. When something good happens, they feel good. When something bad happens, they feel bad. They don't realize that their feelings are the cause of what is happening to them. As they react with the negative feelings to something that has happened, they give out more negative feelings and they receive back more negative circumstances. They become trapped in a cycle by their own feelings. Their life goes around and around in circle, not getting anywhere, like a hamster on a wheel, because they don't realize that to change their life, they must change their feeling frequency. It's not what happens to you, but how you react to it that matters. बस इसी में पूरा सीक्रेट है कि हमारे साथ क्या हो रहा है डजंट मैटर यार. हम उसको कैसे ले रहे हैं, हाउ वी रिएक्ट टू इट व्हेन वी आर इन ट्रस्ट ऑफ लाइफ, हाउ विल रिस्पॉन्ड टू इट, और इवन वंस आफ्टर अ पॉइंट इट विल आल्सो बिकम ऑटोमेटिक, दैट यार ये मेरे कुछ अच्छे के लिए हो रहा है. राइट नाउ आई डोंट नो, बट दिस इज हैपनिंग फॉर माई गुड. यू नो आई रिमेम्बर मेनी इयर्स बैक, लाइक मेरे ट्रैवल का वन ऑफ द बेस्ट experiences happened, like, for the first time I was traveling abroad just with a friend. So um, everything wrong that could go, went wrong. But because वो first travel था खुद सिर्फ अकेले, and सिर्फ friend के साथ, there was this bubbling excitement कि कुछ भी करो खत्म नहीं होता था. So probably I had missed taking my ticket का print out. वो time था जब भी print out लगता था. And like, here my uncle is panicking कि oh no, ये वो ये, and he had gotten some person to check in for us. And वहां पे वो बोल रहे हैं फ्लाइट ओवर बुक्ड है, 2 दिन पहले भी फ्लाइट ओवर बुक थी और कुछ पैसेंजर्स को वापस भेज दिया, फ्लाइट ओवर बुक्ड है, इसको अंदर भेजो, इसको वापस, यू नो एंड बाहर मैं एम लाइक बस थोड़ी देर में आई बी जस्ट फ्री, आई विल जस्ट बी ऑन दिस ट्रिप ऑफ अ लाइफ टाइम एंड आई एम जस्ट बबलिंग. एंड देन somehow things happen, I go in, and I go on this counter and they say flight is overbooked, we can't give you your seat. But guess what? We have 2 seats in business class, and you get a business class seat. So that was like, oh my God, So my first ever business class seat was like a free upgrade. And देन हमने बहुत ही सस्ती फ्लाइट्स बुक की थी. लाइक हम पैसे बचाएंगे, हम एक ये वाली ट्रिप करेंगे. सो दिस वाज दिस एतिहाद एयरलाइंस एंड इट हैड अ फ्री 21 आवर स्टॉप ओवर एट इजिप्ट. वी वर गोइंग टू रशिया एंड लाइक कुछ नहीं यार, 21 घंटे हम एयरपोर्ट पे बिता लेंगे, 10,000 बचाए हमने यार, वेरी गुड वेरी गुड. सो हम वहां पे गए, इन एक आध घंटा इट हिट अस के यार एयरपोर्ट पे तो नहीं रह सकते, लेट्स लुक फॉर होटल्स. तो हम 2-3 हजार वाली होटल्स ढूंढ रहे हैं. एंड सडनली से अरे पर वीजा वीजा ही नहीं है, हम तो बस ऐसे ही आ गए. सो वी आर लाइक ओके, लेट्स लुक फॉर इट एंड वी स्टार्ट जस्ट गोइंग एंड इंक्वायरिंग. एंड वी आर लाइक अच्छा ये इन लोग का एक टूरिज्म पैकेज है विच वी डिडंट नो व्हाइल बुकिंग द टिकट्स, दैट वी गेट अ फ्री 5 स्टार स्टे इन अ Le Méridien and a free pickup and a drop and like a city tour. And we just couldn't believe, कि ऐसा भी हो सकता है. So हम जो एयरपोर्ट पे सोने वाले थे, now suddenly we are in a 5 star hotel. And we are just traveling the country. Again, we found some Guju people and we just gave them dollars. They gave us Egyptian money. And मतलब things are just flowing. I was vegan, तो मुझे फ्लाइट में भी vegan खाना मिल गया. वहां पे भी बुफे लगा था, बट आई एम वीगन, तो दे आर गिविंग अस फ्रेशली कुक्ड फूड एंड सम फ्रेश थिंग्स. सो इट वाज लाइक एक के बाद एक चीजें होती गई. इन रशिया आल्सो द काइंड ऑफ होस्ट वी गॉट, हम फर्स्ट दिन गए, दे हैड प्रिपेयर्ड अ नॉन वेज थिंग्स फॉर अस एंड वी आर लाइक अरे हम तो वेजिटेरियन है. एंड this lady is for whole 1 month is cooking meals for us day and night. उन लोग खुद खुद के लिए खाना नहीं बनाते. दे आर 3 people लिविंग, दे ऑल ईट आउट, प्रॉबेबली ब्रेकफास्ट या एक चीज बना लिया, मोस्टली दे हैव चाय एंड चॉकलेट टुगेदर, ग्रीन टी. एंड बट इन लोग दे वर सो काइंड. फर्स्ट ऑफ ऑल दे स्टॉप्ड ऑल नॉन वेजिटेरियन फूड फ्रॉम मेकिंग इन देयर हाउस. एंड उन्होंने हमारे लिए दिन में 2-2 बार 3-3 बार हमें टिफिन पैक करके दे रहे हैं. एंड लाइक वी हैड टू बी इन सम स्कूल वहां पे इन अ टीचिंग
रोल, तो वहां पे अदर इंडियंस आर सरप्राइज कि यार हमारे होस्ट तो हमें पूछ भी नहीं रहे, तुम्हारे टिफिन भर भर के दे रहे, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। देयर वी डिड अगेन स्माइल कार्ड। सो सिंपली बिकॉज हम वो फ्रीक्वेंसी में थे, चीजें बस खुल रही थी। एंड ऑल्सो नॉट सो गुड थिंग्स हैपेंड बाय द एंड, वी हैड सम ट्रिप्स प्लान्ड, वो नहीं हो पाई। माई फ्रेंड हैड अ वेरी सिवियर हेल्थ ब्रेक डाउन, so we had to come back to India again. मैं लास्ट वी जस्ट डिसाइडेड अ प्रीवियस नाइट, मैं लास्ट मोमेंट पे टिकट बुक कर रही हूँ। ऑन एयरपोर्ट वी रियलाइज मैंने दोनों टिकट्स खुद ही के नाम की बुक कर दी है, एंड देन अगेन थर्ड टिकट हमें उसके लिए बनानी थी। वहां पे मेरे मेरे इस पे पेपर स्प्रे था, सो देर आर दोस कमरास वेयर पुलिस आर देयर ऑन द एयरपोर्ट, विच we ended up going, and they are talking in Russian, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, and they are like ये क्यों है तुम्हारे पास, and we are like just so everything that could go wrong also went wrong. My friend got hospitalized there, but it is still the most memorable and the most close to our heart trip that we would call. We still laughed off, spending crazy amount in the end on tickets, wasting crazy amounts on tickets. And because हम वो high frequency में थे, we still after 15 years of it, we still can't talking about it. We can't stop talking about it. सिंपली बिकॉज हम वो फ्रीक्वेंसी पे थे, वो चीज हमारे साथ ऐसे रिएक्ट की। वर्सेस यही चीज अगर मेरे को मेरे लाइफ का अगर मोस्ट सैडेस्ट स्टोरी बोलना है, आई विल फाइंड मे बी 20 थिंग्स अबाउट इट। तो सिंपली हम जो फ्रीक्वेंसी पे है वो चीज हमारे साथ वैसे करेगी। तो द सीक्रेट इज, हम मोस्टली वो एक ऑटो पायलट पे हो जाते हैं, ऐसा हुआ तो बस यही होगा, अच्छा हुआ तो बस हम खुश होंगे, अच्छा नहीं हुआ तो हम दुखी होंगे। और अगर हम इनफ टाइम दुखी है तो हर अच्छी चीज में भी हम दुख होने के लिए चीजें ढूंढ ही लेंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, हम एक ऑटोमेटिक रेपिटेटिव मशीन हो गए हैं। बाय द टाइम वी आर लाइक ओवर 20-25, हम एक मशीन की तरह चल रहे हैं विदाउट इवन बीइंग अवेयर। ये हुआ तो ये फील करेंगे, ये हुआ तो ये फील करेंगे, ये हुआ तो एक पुराना सॉफ्टवेयर बस रिपीट हुए जा रहा है और हमें चलाए जा रहा है। दैट्स वाई बीइंग कॉन्शियस, बीइंग अवेयर पे इतना ध्यान दिया गया है कि तुम्हें लाइफ बदलने के लिए बाहर कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अवेयर होना है, कॉन्शियस होना है। जस्ट कुछ हुआ और तुमने उसको कुछ रिएक्ट किया, उसके बीच में 1 सेकंड का गैप इज इनफ टू शिफ्ट फ्रॉम रिएक्शन टू रिस्पॉन्स। और हमें बस वो गैप्स लाने हैं। दैट कुछ हुआ, आई टेक अ मोमेंट, आई कॉल फॉरवर्ड एन इमोशन कि मुझे ये सिचुएशन में ये इमोशन देना है, एंड दैट इज हाउ देन दैट सिचुएशन। अगर हम पुराने इमोशन से ही हम चलते जाएंगे तो हम पास्ट रिपीट करते जाएंगे। सो हमारे फ्यूचर में भी हमारा पास्ट ही रिपीट हो रहा है, नए सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस में भी सेम ओल्ड एक्सपीरियंसेस ही रिपीट हो रहे हैं, अनलेस वी ब्रिंग द अवेयरनेस इन एंड अनलेस वी यूज आवर फ्री विल मोर ओपनली। सो जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की, बताया था कि अगर हम सिचुएशन अच्छी है और हम खुश है, दैट इज स्टिल बीइंग विक्टिम टू लाइफ। But the moment we take ownership that I will decide no matter what happens, I will choose what I will feel in that situation, that is the beginning of creatorhood. That is the beginning of tapping the power, tapping into this power. So हमें समझ नहीं आता है कि हम, many people don't know about the power of good feelings, so their feelings are reactions or responses to what happens to them. वो सिर्फ रिएक्शन में चले जा रहे हैं, या अभी जो हुआ उसको रिएक्ट करते जा रहे हैं, और इसीलिए लाइफ ऑटो पायलट पे चलती है इंस्टेड ऑफ डेलिबरेटली चार्ज। अगर हमें पावर फील नहीं हो रहा है, सिंपली हम एक ये रेपिटेटिव मशीन हो गए हैं, एंड इट इज पेनफुल एंड इट इज सपोज टू बी पेनफुल, सो वी स्टार्ट कमिंग बैक टू आवर पावर। सो अगर अच्छी चीजें हो रही है और अच्छा लग रहा है, बुरी चीजें हो रही है और बुरा लग रहा है, सो हम वी आर एट द कॉज ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस, हम एक विक्टिम है ऑफ व्हाट इज हैपनिंग टू अस, वी आर नॉट द क्रिएटर। और अगर किसी को भी अगर हमने नेगेटिव चीज दे दी तो वो और एक स्पाइरल, हमने देखा कि एक स्नोबॉल इफेक्ट होगा, and वो और नेगेटिव होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, एंड बिफोर वी नो इट हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे, हम एक साइकिल में फंस जाएंगे। और वो साइकिल क्या है? हमारे बुरे फीलिंग्स का एक ट्रैप है, हमारे बुरे फीलिंग्स का एक केज है।
एंड इट्स लाइक हमें भी काफी बार लगता है ना यार, बस भाग रहे, कहीं जा नहीं रहे. तो इट्स लाइक अ हैमस्टर कॉट ऑन अ व्हील. हम एक बस ट्रेडमिल पे भागे जा रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है. Because they don't realize to change their life, they must change their feeling frequency. कि ये frequency पे तुम कुछ भी कर लो यही मिलेगा. Unless we deliberately change our frequency, our life will not change. So it is not what happens to us, but how we react to it or how we respond to it that matters. We can just do this paragraph. If you don't have enough money, naturally you don't feel good about money. But the money in your life will never change while you don't feel good about it. If you give out negative feeling about money, you are on a negative frequency about money and you will receive back negative circumstances such as big bills or things breaking down, which are all circumstances that drain you of money. When you react with negative feelings to a big bill, you give out more negative feeling about money, which brings even more negative circumstances to you that drain you of more money. Yes. So मनी का हमें सवाल था, उसका जवाब मिला कि अगर naturally, we don't have a very good feeling about money. Most of the time, we think about money, एक चिंता रहती है, एक heaviness रहती है, एक worry रहता है, एक distrust रहता है. Then money will have no option but to work like that with us because हमारा free will है, हमने वो frequency दी. Money को option ही नहीं है but to react that way. It's simply because हमने वो lens पहना है, we can't look at it any other way. So if we are giving out negative feelings, we are on a negative frequency about money, and we will receive back more negative circumstances such as big bills or things breaking down, which are all the circumstances that drain you of money. When you react with negative things to big bill, you give out more negative feelings about money, and which will bring more negative circumstances that drain us of more money. सो बचपन में एक सीड डाला, और आज वो इतना बड़ा ट्री हो गया और इतने फ्रूट्स दे रहा है. सिंपली वो फ्रूट्स वो है जो हमें नहीं चाहिए, पर हम फ्रूट्स से फाइट करते हैं और फ्रूट्स निकालते हैं. नेक्स्ट सीजन वो फ्रूट्स आएगा. वी जस्ट हैव टू पुट अ न्यू सीड ऑफ फीलिंग लव फॉर मनी, feeling gratitude for money, feeling joy for money. Water it every day, nurture it every day, and we will see that will sprout. We will see that will work. Because पैसे की कमी नहीं है, एक्चुअली उसमें बस अभाव है, उसमें भाव नहीं डाला है. सो एवरीथिंग इज रिस्पॉन्डिंग टू अस एंड दैट इन इटसेल्फ. एंड कल हमने एक चार्ट डाला कि वी स्टार्ट विद बैड फीलिंग, और वो बैड फीलिंग से जो हमें नहीं चाहिए वो होता है, और उससे और बैड फीलिंग्स आती है, और उससे और जो नहीं चाहिए होता है, और उससे और बैड. तो वही एक लूप चलता रहता है, चलता रहता है, एंड दैट इज सेम विथ मनी ऑल्सो. That is same with all areas, including money. So today we start taking back, we start feeling love for money, in different areas. And जो जो पैसा अभी तक मिला है उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड नहीं किया है, उसको थैंक यू बोले, पेरेंट्स को थैंक यू बोले फॉर ऑल दे डिड द बेस्ट दे कुड. एंड लाइफ को थैंक यू बोले कि ये राइट सर्कमस्टांसेस है मेरे लिए फॉर मी टू फ्लरिश एंड आई ट्रस्ट यू. So we can do that and begin with that today. And on that note, we can also end today's session. And thank you all once again for being here and for being part of this journey and giving all of us this privilege of, doing this beautiful, beautiful discovery together. So thank you all and see you all tomorrow. And yes, if there are any questions, we can also take the questions. Otherwise, we can just end with a song. Today, we will end with a gratitude song. So we can use this time to just hold hand on our heart and feel that gratitude for love, for money, for our parents, for life, for this power, and for each other, and for everything else, and for ourselves mainly. So that is the invitation. Yeah. All right. See you all tomorrow. Milte hai. Enjoy the song.
Take care. Thank you. You're my life, you're my breath, you're a smile, you're my guest. You're the earth, you're the sun, you're the grass, you are love. You're my hands, you're a bug, you're my eyes, you're a hug. You're the light in the dark, you're the spark, you are fun. You're my mom, you are water, you're the stars, you're my daughter. You're my friend till the end, you're my dreams, you're my father. You're the ants on the ground, the miracles that surround. I'm feeling it all around, the hemisphere in the clouds. You're my pain, you're my sorrow, you're my hope for tomorrow. You're the strength when I'm hollow, you're the path that I follow. You're the blessings that exist, the small things that are bliss. The gift to realize that all everything that is a gift. I am, all that I see, all that I've been, and all that I'll ever be is a blessing. It's so amazing, and I'm grateful for it all, for it all. Grateful for it You're the all. blessings every time I try to count. You're the lessons that I learn every time I turn around. You're the water when I'm burned every time I think I found everything I'm looking for. You're the sign saying stop to take a bow and keep moving forward and start looking towards your heart. It'll open all the doors and only then you'll start to hear the world singing chorus with your mind and heart. Aligned in purpose, everything All will feel that I gorgeous. am, all that I see, all that I've been, and all that I'll ever be is a blessing. It's so amazing, and I'm grateful for it all, Every day I sit and pray cause what I have is more than I deserve or could ever imagine. How do I give back to all of this magic and spread the love so everybody can have it? Doesn't matter if I'm rich or poor, if I got a family or if I'm all alone. Bad things happen, I can just complain and moan. Well, there's a million things that I can be grateful for. So I lift up my hands now, and I open my heart, and my gratitude goes out to everything near and far. All that I am, Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I look deep down and feel all the blessings. Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I'm grateful for it all. It's amazing. Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I look deep down and feel all the blessings. Everything I am and everything I see, everything I hope and everything I dream, everything I feel and everything I be. I'm grateful for it all. It's amazing. grateful for it all. You're the blessings that exist, the small things that are bliss, the gift to realize that everything is a gift. Thank you all. See you tomorrow. Thank you. Thank you.